Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we discuss another theorem that also discussed in the previous exercise 13.1 in the start of the complex integration, and that statement is if the function is analytic in a domain, in any simply connected domain, if function is analytic and you want to integrate that function within 2 points, within this path, ये कर्व हो सकता है, लाइन हो सकती है. So if the function is analytic and in a simply connected domain and you want to find the integral of that function along any path, answer is always equal to you directly integrate that function. Means if the integration of this function is capital F of z, then applying upper and lower limit. We already discussed this one. So means remember two things here. If the function is analytic and path is closed, then answer is 0. If the function is analytic and domain is just simply connected and that may be a straight line, maybe any curve in that domain, then you can say that function's integration is equal to directly integrate that one, right? For example, if the function is analytic and your domain is this one is your domain, this whole thing is your domain, right? This one is your domain. If the function is analytic and if you want to find the integral of that function along this closed path, then answer will be 0. And if you want to find the integration of that function along this straight line or along this curve, then directly integrate that function and applying upper lower limit, right? Answer not will be equal to 0 if path is not closed. Remember these two things here. मतलब बेटा आपने ये याद रखना है कि अगर एक फंक्शन एनालिटिक है, आपकी ये पूरी डोमेन सिंपली कनेक्टेड है. ये सर्कल इसके अंदर नहीं है कि आप समझेंगे तो ये कोई सुराख है, ये डबल है तो हमने बाद में लिया है, ठीक है. आप अगर इस पाथ के अलोंग फाइंड करोगे इंटीग्रल तो आंसर 0. इसके अलोंग करोगे, इसके अलोंग करोगे, कर्व के अलोंग करोगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करो और ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये लिमिट अप्लाई कर दो, ठीक है. फिर आंसर डायरेक्ट 0 नहीं आएगा, मे भी 0 आ जाए, लेकिन फिर काशी इंटीग्रल थ्योरम से 0 नहीं आएगा. काशी integral theorem is applicable for the closed path. This is the theorem, existence of the indefinite integral. Simply मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अब भी बता दिया. So this is the Cauchy integral. So not a Cauchy integral theorem. This is a simple theorem when function is analytic and you want to find the integral of that function within some domain, within some path. Now there are some important results. Cauchy's theorem for multi-connected domains. फर्स्ट वी डिस्कस फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन. काशी इंटीग्रल थ्योरम आपने सिंपली कनेक्टेड डोमेन के लिए किया. वी डिस्कस ऑलरेडी काशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन. नाउ वी डिस्कस फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन एंड फॉर triply connected domain. The answer is very simple. No proof required here. Just understand the theorem statements, right? As this one is the doubly connected domain. Leave this one, right? इन चीज़ों को छोड़ दे. ये आपके पास सर्कल है और इसके अंदर एक सर्कल है. ये दिस डोमेन, दिस वन इज डबली कनेक्टेड डोमेन. रिमेंबर दिस. According to this theorem, we have proof here. No proof required here. If you want to find the integral along this path, then the integral along this path always equal to integral along this path. क्या बात कही मैंने? कहा कि अगर आपने इंटीग्रल इस पाथ के अलोंग लेना है तो उसका आंसर वही होगा जो इस पाथ के अलोंग होगा. ये हमारा बहुत जगहों पे यूज होगा, मैं अभी आपको बताती हूँ कहाँ, ठीक है. ये डबली कनेक्टेड में सब ये बात याद रखें. अगर आपके पास एक डोमेन है, उसके अंदर भी एक सर्कल है और वो सर्कल आपको पता है क्या है, तो आप उसके अलोंग फाइंड करने के बजाय उसके अलोंग भी फाइंड कर सकते हैं. इस पॉइंट को ये है मीन्स इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C1 ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन अलोंग C2. दिस वन इज C2 एंड दिस वन इज C1, राइट. ये आउटसाइड जब C1 है, इनसाइड इज C2. रिमेंबर लीव दिस पॉइंट. ये प्रूफ में मुझे रिक्वायर्ड थे इसलिए मैंने बाद में बनाया, राइट. रिमेंबर दिस वन ओनली. Now this is the triply connected. क्यों? ये एक ये है, two circles inside. Leave this one, right? There is no these signs here. So if you want to find the integral along this one, that must be equal integral sum of the integral along these two. As integral along C1 always equal to integral along C2 और integral along C3. मीन्स अगर आउटर बाउंड्री कोई भी है, उसके अंदर अगर 10 सर्कल्स हैं तो आउटर बाउंड्री का इंटीग्रल इक्वल होगा उस सम ऑफ द
इंटीग्रल्स ऑफ द 10 सर्कल, जितने भी अंदर हैं उन सब के इक्वल। ये कहाँ कहाँ यूज होना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। दिस इज फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन, रिमेंबर दिस। इफ यू वांट टू फाइंड द इंटीग्रल अलोंग दिस आउटर पाथ, then if there is one circle, then integral is equal to along that one. If there is two circle, integral along the closed path, not circle necessary. Means if there is a two closed path inside the domain, then integration along this outer circle is equal to the sum of the integral along these two. If there are three circles, then integral along the outer circle is equal to the sum of the integral along the three circles, if there exist three circles, and so on, right? This is the Cauchy integral theorem for triply connected domain. Remember this. अब देखिए ये यूज कहाँ होंगे. इफ यू हैव दिस कॉम्प्लिकेटेड डोमेन एंड यू डोंट नो अबाउट द व्हाट इज द पाथ ऑफ दिस इज द पार्ट ऑफ विच सर्कल, विच कर्व, विच पाथ, ये कितना कम्प्लीट, ना ये सर्कल है ना कुछ है. नाउ यू वांट टू फाइंड द इंटीग्रल अलोंग दिस वन. यू कंसिडर अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस इनसाइड डोमेन and find the integral along that one. And by Cauchy integral theorem for doubly connected domain, you can say integral along this path is equal to integral along this path. तो आपको कितना इजी पता चल गया इसमें कि क्यों हमने ये थ्योरम किया है, क्योंकि देखे ना ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता ही नहीं ये क्या है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक सर्कल ले लेंगे, उसके लॉन्ग आंसर निकालेंगे, कहेंगे इसके लॉन्ग आंसर उसके लॉन्ग आंसर इज द सेम. ये हमने काशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन एंड फॉर ट्रिपली कनेक्टेड डोमेन के लिए इसलिए पढ़ा. सो मीन्स काशी इंटीग्रल थ्योरम फॉर डबली कनेक्टेड डोमेन, फॉर सिंपली कनेक्टेड डोमेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द solutions for the questions of exercise 13.2. Remember, this is used in 13.2. For example, you have one example dz over z minus a, where c is any simple closed curve. C is any simple closed curve, not circle, any simple closed curve, and z is equal to a is any point. And remember, if this point lie inside C, then what is the answer of this one? If this point lie outside C, then what will be the answer? You know that this function is not analytic at A, because when you put z is equal to a, then answer will be 0, and 1 over 0 is undefined, means function is not analytic A. If A lie inside your domain, then you cannot say that answer will be 0. But if that point lie outside your domain, if the point lies outside the domain, then you can say that integral of that function is 0, because path is closed, function is analytic. Analytic everywhere in your closed path, क्योंकि ये तो कह रहा बाहर है. अगर a बाहर है, ये outside है, तो आंसर will be 0. But if a lies inside, suppose a lie inside C, then you cannot say by the theorem Cauchy integral theorem आंसर विल बी 0. आप काशी इंटीग्रल थ्योरम यूज नहीं कर सकते कि इसका इंटीग्रल 0 है. आप किससे करेंगे, बाय पाथ. नाउ यू यूज बाय पाथ हियर. सो इंटीग्रेशन अलोंग सी इज इक्वल टू C1. उसके अंदर आपने एक C1 पाथ ले लिया, जो भी आपके पास डोमेन थी, राइट जी. ये देखें, अब मैंने z लाइज इनसाइड एंड दिस इज द गिवन डोमेन. आई डोंट नो what is this domain, what is this one, this is circle or no, I don't know about this curve, right? So how can you evaluate the integral along this path जब आपको पाथ ही नहीं पता ये कैसा है? We consider by doubly connected domain theorem, we consider a circle inside this domain of radius r and center a. Say center is a here, right? Now means integral, if you want to find the integral along C, that must be equal to integral along C1 according to Cauchy integral theorem for doubly connected domain, right? We write here as. Now what is Z minus, this one is the circle, this path is a circle of radius R and center A, so means this circle Z minus A modulus is equal to R. So you know that you can write this one as, and Z is equal to A plus R e raised to power iota theta. What is z dot? Z dot is equal to this, and you know for the closed path in limit is always 0, less than equal t, less than equal 2 pi. So we use all these things here and use by path some simplifications here. जैसे z minus a modulus is equal to r, then you get z dot is equal to this one. But you know that there is a function 1 over z minus a. Z minus a is equal to r e raised to power iota t. So what is 1 over z minus a is equal to 1 over r e raised to power iota t. Remember this one. After that one we see that substitute all the values. Integral c 1 over z minus a dz is equal to 0 से 2 pi. 1 over z minus a is right as, just write here r e raised to power iota t. ठीक है, उसने पहले z लगा दिया, फिर माइनस, मैंने पहले वैसे ही आपको सिंप्लीफाई कर दिया. यू कैन आल्सो राइट हियर 1 over r e raised to power iota t, because you can write here as, because z minus a is equal to this.
You can directly write r e raised to power iota t, right? And r e raised to power iota t dt cancel here, e raised to power iota t cancel with this one. Right, then when cancel e raised to power iota t r cancel, then you get only iota here. And what is the integration of iota? Iota is constant, take outside, and what e raised to power iota t minus iota t is equal to 1. E raised to power 0 is 1, so integration of 1 is t, and applying the limit, then you get this one. So now in this case answer will be 2 pi iota. Path is close, but answer is 2 pi iota. And the reason is function is not analytic within the domain. A non-analytic singularity exists. Singularity is a point where function is not analytic, so that point lie inside the domain. So you can see here function is not analytic within the domain. If the function is analytic within the domain, then you can say that function's integral will be 0. इस एग्जाम्पल में ये बात याद रखिएगा कि ये डबली कनेक्टेड मैंने यूज़ किया, और आपके इसमें सिर्फ डबली कनेक्टेड ही यूज़ होना है। मे भी कहीं ट्रिपली कनेक्टेड आ जाए, लेकिन डबली कनेक्टेड ज़्यादा है, राइट? यू वांट टू फाइंड द इंटीग्रल अलोंग दिस पाथ, सो इफ़ यू वांट टू फाइंड द इंटीग्रल अलोंग दिस पाथ, एंड दिस पाथ इज़ नॉट वेरी फेमिलियर पाथ, यानी आप जानते ये कौन सा पाथ है, सो कंसिडर अ सर्कल विद इन दिस डोमेन and with the center at that singularity where the function is not analytic, उसको center रख के फिर आपने करना है. So means we use this path, integral along this curve is equal to the answer is equal to the integral along this path. So consider this one and write here all the things.